हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस फ्रेमवर्क में व्हाट वील डू इज दैट कि रिटेल इन्वेस्टर्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर द मैनेजमेंट इज वॉकिंग द टॉक और नॉट, दैट वी विल सिंप्लीफाई यूजिंग एलएलएम। तो आने हम एआई का एक प्रॉम्प्ट सीखेंगे जो आपके लिए मैंने एक फ्री गिव अवे भी करा है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, जिसको आप यूज करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या मैनेजमेंट सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। जैसे स्कूल में क्या होता था कि इवन दो मैथ्स के अंदर मैं प्रोबेबिलिटी और कैलकुलेशन में काफ़ी अच्छा था, तो अभी यश से ही मजाक चल रहा था पहले। बट ऐसा लगता था हमेशा एग्जाम देने के बाद 9th-10th में कि आई विल स्कोर 95/100। एंड जब एक्चुअली में एग्जाम के रिजल्ट्स आते थे तो मेरे पास मेरे मार्क्स 50 या 55 के आसपास आते थे। मेरा जब मैं पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देता था तो उसमें लगता था कि 60-70 आएंगे, बट एक्चुअली में मार्क्स 98 to 99 के आसपास आते थे। तो एक्चुअली मैं वॉक द टॉक नहीं कर रहा था व्हेन इट वाज लिंक टू मैथ्स एज अ सब्जेक्ट। तो व्हाट वील डू इन दिस वीडियो इज दैट मैनेजमेंट्स रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ वाया एनुअल रिपोर्ट्स, वाया इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस, वाया कॉन्फ्रेंस कॉल्स, वाया इंटरव्यूज एंड वाया एजीएम्स बार बार अपनी लॉन्ग टर्म की गाइडेंस और अपनी स्ट्रक्चरल बिजनेसेस में क्या होने वाला है, क्या नंबर्स कंपनी डिलीवर करेगी, उसकी बात करती है। बट काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए का हर बारी सारी कॉन्फ्रेंस कॉल्स पढ़ना ईजी नहीं है, सारी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ना ईजी नहीं है। बट स्टिल आपको मैनेजमेंट की अगर रिपोर्ट कार्ड बनानी है कि वेदर द मैनेजमेंट इज वॉकिंग द टॉक और नॉट, दैट वी विल सिंप्लीफाई फॉर यू। Because sometimes reading annual reports, conference calls, investor presentations, and reading all the documents related to the company sometimes takes a lot of hours. And via this one single prompt, हम लोग management की report card बनाना सीखेंगे, whether the management is actually walking the talk or not. So I and Yash, who's a part of the SOIC team, what we'll do is that we'll take multiple case studies. ना आपके साथ मैं इनमें prompt भी share करूंगा कि आप कैसे easily identify कर सकते हैं whether the management is walking the talk or not. Now, before I start the video, do drop a alias in the comment section below if you're excited for it, and make sure that you smash the like button. With this, let's start. तो अब हम यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एंड फर्स्ट एग्जाम्पल दैट वी हैव इज दैट ऑफ हाइकल। एंड हम यहाँ क्या करेंगे, अगर आप देखेंगे सिंपली प्रॉम्प्ट पे फोकस कीजिए, बिकॉज यूजिंग जीपीटी फॉर मैनेजमेंट एनालिसिस और यूजिंग जीपीटी फॉर एनीथिंग इज ऑल अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो हमने यहाँ पे चैट जीपीटी खोल रखा है, सेम आप ग्रॉक पे भी कर सकते हैं, सिमिलर थिंग आप जेमिनाई पे भी कर सकते हैं। तो अगर आप सिंपली प्रॉम्प्ट पढ़ेंगे तो प्रॉम्प्ट हमने कैसे क्रिएट करा है कि एनालाइज हाइकल्स वॉक द टॉक फ्रॉम FY18 to FY25, क्रिएट अ टेबल विद कॉलम्स, ईयर पीरियड, मैनेजमेंट गाइडेंस, क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव, एक्चुअल आउटकम, इंडिकेटर। एंड इंडिकेटर में क्या होना चाहिए कि ग्रीन डॉट फॉर अचीव, येलो फॉर ऑलमोस्ट मेट, रेड फॉर मिस्ड, एंड डबल ग्रीन फॉर ओवर अचीव। माने कि मैनेजमेंट ने जो बात करी पास्ट में, क्या मैनेजमेंट उसको अचीव कर पाए नहीं कर पाए। एंड सोर्स द डेटा फ्रॉम एनुअल रिपोर्ट्स, अर्निंग्स कॉल, फाइनेंशियल डेटा, एंड फोकस ऑन रेवेन्यू ग्रोथ, EBITDA मार्जिन्स, प्रोडक्ट लॉन्चेस, एक्सपोर्ट्स, अप्रूवल्स, इंक्लूड इंडिकेटर्स एंड अ समरी। यू कैन फेच द डेटा फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेस। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, आप और क्या कर सकते हैं कि आप एक रोल भी ऐड कर सकते हैं, दैट यू आर अ वर्ल्ड क्लास इक्विटी एनालिस्ट। तो आपके लिए मैंने एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट रोल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है। एंड आप एंड में ये भी कह सकते हैं कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज स्पेसिफाई। एंड यहाँ पे हमने ये भी मेंशन करा है, यू कैन फेच द कॉन्कॉल्स फ्रॉम ट्रस्टेड डेटा सोर्सेज। ऑल्टरनेटिवली इफ यू वांट अ बेटर आंसर, क्योंकि एक टाइम पे जीपीटी या जेमिनाई में मोर देन 10 पीडीएफ नहीं डलती, तो आप लास्ट 10 कॉन्फ्रेंस कॉल्स भी अपलोड करके चैट जीपीटी में डाल सकते हैं। एंड देन यू कैन ऑल्सो एंटर द प्रॉम्प्ट, तो वो हम आपको एंड में भी करके दिखाएंगे। तो वो उन्हीं पीडीएफ में से आपको डेटा ढूंढ के देगा। तो ये तो हमारा हाइकल का हमारा एक आंसर आया। तो दिस आंसर यश कैन चेक एंड यश कैन रीड इट आउट एंड ही कैन जस्ट, तो ये जो टेबल है ये आपके साथ आ सकती है, इट कैन रियली हेल्प यू। तो यश विल रीड आउट द आंसर एंड यश विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि वेदर द मैनेजमेंट इन द पास्ट हैज मेट द गाइडेंस और नॉट। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूजिंग दिस टूल। Yes, so यहाँ पे we have analyzed Heikel's walk the talk from FY18 to FY25. So for FY18 if we see कि management ने guide करा था 18 to 20% growth for next 2-3 years and capex of 250 crores for 18 to 24 months and achieving almost 1.5 to 1.75 x of asset turns. And also they were guiding कि they will have PMDA Japan audit at Bengaluru successful that would open the Japan market for them. So what was the actual outcome? H2 momentum was strong, Japan entry was unlocked for them, and also product customer pipeline building segment EBITDA improvement noted mid-year. So they were able to achieve the guidance, seeing the green indicator. And now if we just come on to like FY21, so
In FY21, they were guiding for high teens revenue growth and 100 bips EBITDA margin expansion for the next 2-3 years. And also, they were guiding for multiple launches and capex to support the scale for the company. तो यहाँ पे strong post-COVID rebound was there in India specialty pharma backdrop, and company reiterated their growth margin roadmap through the year and executed launches. There were no hard misses, and actually, if you see, it is giving that they've been able to overachieve what they guided in FY21. तो यहाँ पे ये तो यश ने हमें दो एग्जांपल्स बताए, व्हेन दे अचीव द गाइडेंस एंड व्हेन दे ओवर अचीव द गाइडेंस. नाउ लेट्स लुक एट व्हेन दे मिस द गाइडेंस. तो FY22 में they entered the year with growth intent, but regulatory environment closure at Taloja hit supply. मैनेजमेंट ने बोला कि नियर टर्म में 12 to 15% की टॉप लाइन ग्रोथ आएगी. बट एक्चुअली में क्या हुआ, तलोजा शट डाउन मटेरियली हर्ट वॉल्यूम्स एंड मार्जिन्स, डी स्टॉकिंग एंड प्रेशर इमर्ज्ड. H2 कमेंट्री टर्न कॉशियस. तो एक्चुअली में मार्जिन गाइडेंस यहाँ पे मिस कर दी. फिर FY23 में देखते हैं कि रिकवरी प्लान थ्रू आउट H2, मिड टू हाई टीन्स ग्रोथ आएगी कंपनी की. तो कॉस्ट एक्शंस अंडरवे करे, बट एक्चुअली में मैनेजमेंट की मार्जिन गाइडेंस भी मिस हो गई एंड रिकवरी वाज स्लोअर देन होप्ड. वेयर एज लेटेस्ट एग्जांपल देखते हैं कि FY25 का, तो वहाँ पे भी एक टेलिंग केस स्टडी है जो आई थिंक यश कैन एक्सप्लेन. तो आई थिंक उसके बाद मैं Q1 FY26 का भी आपको यहाँ पे रीसेंट केस स्टडी भी बताऊंगा. Yeah, so in FY25, they were saying that industry normalization can happen in FY25. So management outlook was to return to historical 18 to 20% EBITDA margin next few years. And also 2-3 API launches per year, what that they were planning, and animal health validation, CDMO pipeline ramp up, and also growth of 10 to 15% when crop normalizes for them. So actually what happened, like margin, what they achieved was 17.7% of margin. So it improved, but not to the level that they were guiding for. And also in Q4 FY25, their EBITDA margin was like 22.4%, which were higher. And in animal health, they had 8 validations. A CDMO pipeline was healthy, what company showing, and also top line growth was 4%, below 10-15% aspiration. So top line growth was largely like not a hit for the company basically, where it significantly under delivered, and but a margin recovery was on track in Q4 25. So it somewhat achieved, somewhat not achieved. That's what it is trying to show here. बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप क्या कर सकते हैं कि एक्चुअली में व्हाट यू कैन डू रिसेंटली. अब जैसे कंपनी की जो रीसेंट कॉन्फ्रेंस कॉल थी जो हम स्टॉक स्कैन से निकाल सकते हैं. लेट मी जस्ट ओपन स्टॉक स्कैन्स, राइट, एंड स्टॉक स्कैन से रीसेंट कंपनी कॉन्फ्रेंस कॉल निकाल सकते हैं. अगर हम यहाँ पे हाइकल डालते हैं, लेट मी जस्ट ओपन हाइकल. तो हाइकल के अगर हम डॉक्यूमेंट्स देखते हैं तो यहाँ पे जो रीसेंट ट्रांसक्रिप्ट है, टू मेक इट इवन मोर फन, राइट, तो व्हाट आई विल डू इज दैट कि मैं इस रीसेंट ट्रांसक्रिप्ट को कंपनी की डाउनलोड करूंगा. राइट, तो यहाँ पे हम डाउनलोड कर सकते हैं रीसेंट ट्रांसक्रिप्ट को. तो जस्ट ओवर हियर इट गेट्स डाउनलोडेड, एंड व्हाट वील डू इज दैट कि हम इस रीसेंट ट्रांसक्रिप्ट को भी डाल देंगे ताकि हमारे लिए एक और अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए. तो ये रीसेंट ट्रांसक्रिप्ट हमारी डाउनलोड होगी. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि चैट जीपीटी में आके प्लस के अंदर जाके व्हाट वील डू इज दैट हम ऐड फोटोज एंड फाइल्स करेंगे, एंड देन वील गो टुवर्ड्स डाउनलोड्स, एंड डाउनलोड्स में आके जो भी हमारी रीसेंट ट्रांसक्रिप्ट है इसको भी इंक्लूड करेंगे. राइट, तो यहाँ पे मैं एक डेटा दूंगा यहाँ पे अगेन जस्ट टू फॉलो अप ऑन द प्रॉम्प्ट दैट वी गेव इट अर्लियर कि बेसिकली जस्ट ओवर हियर. तो यहाँ पे मैंने हाइकल की रीसेंट ट्रांसक्रिप्ट भी डाल दी एंड यहाँ पे लिखा कि आई हैव इंक्लूडेड द रीसेंट Q1 FY26 कॉन कॉल एज वेल. प्लीज इंक्लूड दिस इन योर एनालिसिस एज वेल एंड सी इफ दे हैव मिस्ड और अचीव देयर गाइडेंस. पुट इट इन द टेबल अबव. तो अभी तक हमारे पास FY25 तक का डेटा था. अब हमारे पास Q1 FY26 का भी डेटा आ जाएगा. तो दिस विल गिव अस अ बेटर आंसर कि रिसेंटली भी बिजनेस में क्या हो रहा है. अभी तक तो हमारे पास आंसर FY25 तक था. अब हमारे पास आंसर एज ऑफ Q1 ऑफ FY26 तक भी आ जाएगा. नाउ हमारे सामने आंसर भी आ गया जब हमने Q1 FY26 का डाला कि कंपनी ने कंप्लीटली मिस कर दिया अपनी गाइडेंस को. ये कंपनी ने गाइड करा था कि FY26 में फार्मा रेवेन्यू ग्रोथ 12 to 14% आएगी, क्रॉप प्रोटेक्शन फ्लैटिश रहेगा, H2 विल बी बेटर देन H1, 200 करोड़ का केपेक्स होएगा एंड कमर्शियल रेवेन्यू टुवर्ड्स FY26 एंड एक्सपेक्ट होएंगे. बट एक्चुअली में क्या रिजल्ट्स आए, कंपनी का सिर्फ 6.5% का EBITDA मार्जिन आया, जो एक्चुअली FY25 में कंपनी ने कहा था 18 to 20% आ सकता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बैंगलोर साइट को OAI स्टेटस दे दिया USFDA ने, माने ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड, जहाँ से इनकी सप्लाईज बंद हो सकती है. तो इट कैन रिजल्ट इनटू वार्निंग लेटर. मे बी द वार्निंग लेटर हैज आल्सो कम, बट येस द कंपनी मिस्ड इट्स गाइडेंस, राइट. सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दैट इफ यू लुक एट इट, तो अगर हम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से देखते हैं, अगर हम FY22 के बाद देखें तो FY20 के बाद देखते हैं, तो FY20 के बाद ऐसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं 7 इंस्टेंसेज में से कंपनी की 3 बारी मैंने जो गाइडेंस पूरी मिस हुई है रेड हुई है, 1 बारी गाइडेंस पार्शली मीट हुई है येलो में,
whereas only 2 times द कंपनी ने अपनी गाइडेंस को अच्छे से अचीव करा है। बट रीसेंट ट्रेंड्स कंसर्निंग है और अलार्मिंग है कि मैनेजमेंट अपनी वॉक द टॉक नहीं कर पा रही। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइकल। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स अदर मल्टीपल बिजनेसेस। तो यहाँ पे हमने एक और बिजनेस एनालाइज करा, जहाँ पे हमने टेबल बनाई। सो नेम ऑफ द बिजनेस इज जेके लक्ष्मी, राइट। तो जेके लक्ष्मी सीमेंट का हमने एग्जांपल लिया। सो अगेन यश ने यहाँ पे डाला जेके लक्ष्मी सीमेंट का। एंड ब्रॉडली यश क्या आंसर है जेके लक्ष्मी सीमेंट का, कि ग्रीन ज्यादा थे या येलो ज्यादा थे, जस्ट ब्रॉडली अगर हम देख पाए। सो अगर यहाँ पे ब्रॉडली देखें तो जेके लक्ष्मी में ग्रीन्स हैव अ डोमिनेंट, मतलब यहाँ पे ग्रीन्स पूरा डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे। And if you see from even FY16 till FY25, there are only like 3 or 4 instances of yellow, and all of them other than that are green. So that indicates that they are consistently walking the talk from last almost 8 to 9 years. So that shows कि management is guiding and delivering well across last 8 to 9 years consistently. So they have been able to do really well. If we also see like recent FY25 thing, so यहाँ पे they have guided to expand the clinker facility by 2.3 MTPA and also GU facility by 4.6 MTPA, and also rail siding of with the total amount of 325 crore. So first phase they want to make it live by FY26, and also they want to use 50% green power, which can have 100 to 120 ton of cost saving for them. So if we see, management reiterated expansion timelines of 2500 crore over 3 years, moderated FY24 volume growth from 12 to 15% to 8 to 10%. Market and other conditions, whatever is there. So approval, some of logistic conveyor items face delay. Confirmation of FY25 full year green power percent awaits annual report. So it's saying कि this is currently in on the way basically. तो बेसिकली मोस्टली द कंपनी मेट इट्स गाइडेंस। तो अगर आप देखेंगे तो अगेन ये जो रिपोर्ट कार्ड का फीचर है, दिस इज फॉर अस एज इन्वेस्टर्स टू एनालाइज वेदर द मैनेजमेंट इज मीटिंग द गाइडेंस और नॉट, बट मोस्टली द मैनेजमेंट एंडेड अप मीटिंग इट्स गाइडेंस, राइट। तो बॉटम लाइन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे चैट जीपीटी का बॉटम लाइन समरी क्या है कि मोटा मोटा द मैनेजमेंट हैज अचीव्ड व्हाट दे आस्क्ड फॉर, एंड आपको क्या क्रॉस चेक करने चाहिए वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। अब हम और आगे आके एग्जांपल्स देखते हैं, बट बिफोर टेकिंग मोर एग्जांपल्स अभी हम एक व्हेन टू बाय अ स्टॉक का एक वेबिनार का डिस्कशन करेंगे विच वी आर डूइंग ऑन द कमिंग संडे। नाउ जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, अभी तक हमने एसओआईसी के यूट्यूब चैनल पे एक डिस्कशन करा है व्हेन टू सेल अ स्टॉक, बट नाउ व्हाट वील बी डूइंग ऑन द कमिंग संडे दैट विल बी डूइंग अ डिटेल्ड वेबिनार ऑन व्हेन टू बाय अ स्टॉक। बिकॉज बाइंग का भी एक फ्रेमवर्क होता है। सपोज करते हैं अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं एंड यू स्टार्ट डूइंग मोमेंटम इन्वेस्टिंग, सो व्हाट विल हैपन is that you'll be buying at 52 week high and you'll be selling at 52 week low because आपका framework वहाँ पे incorrect होएगा। So there are multiple frameworks even to buy a stock। एक framework होता है value investing का, एक होता है deep pessimism investing का, एक होता है momentum investing का, एक होता है growth at reasonable prices investing का, एक होता है special situation investing का। So we'll be doing a detailed webinar which will have more than 50 case studies which will teach you when to buy a stock, and आप एक framework बना पाएंगे जिससे आप independent हो पाएंगे when it comes to active investing। And not only this, as a part of SOIC membership, we keep doing these Sunday webinars every alternate weeks, जहाँ पे हम live classes करते हैं students के साथ। So our course is not just a one-time recording. We believe in interacting with the students. And as a part of this, in the level 1, what we have taught is कि आप अपनी asset allocation कैसे कर सकते हैं। तो हमारे एक asset allocation पे भी webinar आ रहा है। एंड साथ साथ आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, खुद का फाइनेंशियल प्लान कैसे बना सकते हैं। इन द लेवल 2 व्हाट वी हैव टॉट इज दैट कि आप खुद एक फंडामेंटल इन्वेस्टर कैसे बन सकते हैं, व्हाट आर द थिंग्स टू लुक इन फंडामेंटल एनालिसिस। इन द लेवल 3 व्हाट वी हैव टॉट इज व्हेन टू सेल अ स्टॉक, एंड संडे का जो वेबिनार है व्हेन टू बाय अ स्टॉक वो भी आपको उसमें मिलेगा। साथ साथ हमने हाउ टू फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यूएशन ऑफ अ स्टॉक भी सिखाया है। इन लेवल 5 and 6 विच इज माई फेवरेट, वी ऑल्सो टीच हाउ टू डू इन्वेस्टिंग अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट सेक्टर्स की लैंग्वेज क्या है। एंड फाइनली एज एन एडेड बोनस वी हैव अ क्लास ऑन मास्टरिंग इन्वेस्टिंग यूजिंग AI। तो उसी क्लास का एक सबसेट क्लास है जो हमने इस वीडियो में कवर करी, एंड उस क्लास के अंदर हमने ये सब कवर करा है कि आप AI से आइडिएशन तक, टेक्निकल से लेके फंडामेंटल्स तक और डिटेल्ड इक्विटी रिपोर्ट्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, इट इज़ वन ऑफ द कोर्सेज और एज एन एडेड बोनस जो एक्चुअली में आपका जो आवर्स ऑफ वर्क का इनटू मिनट्स ऑफ वर्क कन्वर्ट कर सकता है। So that course is an added bonus which is valid for a short period of time. You can use the coupon code SOICAI10 which is there in the description below to sign up for the membership. With this, let's go back to the video. तो अब हम TD पावर का आगे एग्जाम्पल देखते हैं। तो TD पावर में हमने सेम एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट डाला एंड यहाँ पे हम TD पावर का आंसर देखते हैं।
तो ब्रॉडली अगर आप टीडी पावर का भी यहाँ पे आंसर देखेंगे तो टीडी पावर में भी आपको दिखेगा कि FY20 में कंपनी ने बात करी, ज्यादा कोई गाइडेंस की बात नहीं करी, नो फॉर्मल गाइडेंस गिवन, तो मतलब कोई स्कोर नहीं दिखेगा वहाँ पे, राइट? दैट इज व्हाट इट मींस, अगर कोई गाइडेंस नहीं होगी तो यस यस यस, नो गाइडेंस तो नो स्कोर। परफेक्ट। एंड अगर FY22 में देखते हैं तो कंपनी ने इनिशियली 650 टू 660 करोड़ की गाइडेंस की बात करी, बट रेस टू 690 700 करोड़, बट कंपनी ने एक्चुअली में यश 704 करोड़ अचीव करा, राइट? A big beat basically on what they've guided on कि 650 60 crore 700 crore, so a really good growth for the company. Even margin side पे भी 10-11% से they've been able to 13.2% approximately, so yeah. तो बेसिकली मार्जिन भी जो 10-11% की गाइडेंस थी वो 13.2 आया, राइट? आया, तो इस वजह से यहाँ पे जो ग्रीन डॉट्स हैं वो 2 आए इंस्टेड ऑफ, yeah, that is the sign of overachieving of what they are guiding for. राइट? एंड नीचे आके भी देखते हैं तो कंपनी ने, अगर हम ओवरऑल देखते हैं FY25 तक, तो कंपनी का टिल 6 इयर्स में 2 टाइम्स द कंपनी ओवर अचीव्ड, Yes. एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स कंपनी का, अगर हम 5 में से देखते हैं तो 3 बारी कंपनी ने ओवर अचीव करा, 2 बारी कंपनी का पार्शली अचीव था, पार्शली मिस था, राइट? सो दैट इज हाउ अगेन यू कैन यूज दिस रिपोर्ट कार्ड। तो वर्डिक्ट वन लाइनर देखते हैं तो TDPS हैज लार्जली डिलीवर्ड और एक्सीडेड ऑन ग्रोथ मार्जिन गाइडेंस सिंस FY22, compounding exports, winning strategic approvals, and broadening the motor traction products like Slate. The only soft spot was FY21 margin, and under FY22 was COVID dislocated. So this is the beauty of using this report card feature. अब हम एक लास्ट केस स्टडी करेंगे, देन फाइनली विल गो टुवर्ड्स द कंक्लूजन, एंड आपके लिए जो प्रॉम्प्ट है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। तो हम बात करते हैं मयूर यूनिकोडर्स की। तो मयूर यूनिकोडर्स इज अ कंपनी जो PU और PVC का बेसिकली जो आपकी जो लेदर होती है वो बनाती है, जो गाड़ियों के अंदर लगता है। एंड हमने अगेन यहाँ पे सेम प्रॉम्प्ट डाला, एंड सेम प्रॉम्प्ट डालने के बाद हमारे पास आंसर आया, राइट? एंड यहाँ पे जस्ट यश विल कवर इट कि ओवर द 5 इयर्स अगर हम देखते हैं तो मैनेजमेंट का आई थिंक लाइक 6 इंस्टेंसेस में से 4 टाइम्स कंपनी ने पार्शली मीट करा और पार्शली मिस करा है। तो व्हाट इज द रीजन यश, अगर हम पढ़ के देखें तो लाइक लार्जली इसमें रीजंस अपन देखने जाएं तो इन FY20 ऑल्सो दे वर गाइडिंग फॉर स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी, फोकस ऑन PU वेयर द मार्जिन्स वर गुड बट देवर एक्सपोर्ट्स वर डिसरप्टेड बिकॉज ऑफ कोविड, एंड operations like largely just they stayed profitable, so they were not able to meet because of COVID uncertainties here. And FY21 में अगर देखें तो they were guiding for growth to resume post COVID, but if you see sales were largely flat here, and also and exports were recovering. And again another instance where they missed their guidance, तो यहाँ पे they were guiding for 18 to 20% margins, which were in range. They achieved 19% guidance and growth was 21%, but they were also talking about here कि to accelerate PU ramp up and push OEM exports, but they were not able to meet this guidance where PU ramp up was slower than what they were hoping for. And also in FY24 they were again guiding for this PU ramp up. तो PU ramp up यहाँ पे फिर से was really slow. It was only 25 crore in FY24. Like they are again and again guiding for this PU ramp up, but they are not been able to achieve it. तो बेसिकली यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम क्या हो जाती है जब हमने यश ने ये टेबल बनाई कि यहाँ पे सबसे बड़ा इशू क्या हुआ है, ये PU रैंप अप का। तो अगर हम समरी में आके देखते हैं तो GPT ने भी क्या बताया कि PU प्लांट प्रोडक्ट रैंप अप, दैट इज द PU रैंप अप लैग्ड अर्लियर एस्पिरेशंस and utilization in FY25 was still 25 to 30%. So this is the clearest area where talk is more than walk so far. That is the beauty of using this feature because यहाँ पे कंपनी बोल ज़्यादा रही है और walk कम कर रही है. So I've included this entire prompt for you in the description box below. And with this, let's go towards the conclusion of this video. And if you love this video, आप conclusion की end तक जरूर देखना, आपको वहाँ पे नीचे prompt भी मिल जाएगा description में. So in conclusion of this video, so Yash and I, what we have done is that कि हमने multiple case studies ली आपके साथ, and जो prompt है to check whether the management is walking the talk or not is there in the description below, right? And इस prompt के साथ आप ये check कर सकते हैं ये कि you can do even multiple case studies कि जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं या किसी भी स्टॉक को आप एनालाइज कर रहे हैं कि आप सिंपली मैनेजमेंट की रिपोर्ट कार्ड बना के देख सकते हैं कि वेदर इन द पास्ट दे हैव डिलीवर्ड ऑन व्हाट दे प्रॉमिस्ड और नॉट. With this, I'll see you in the next business analysis of SOIC. If you love this video, make sure that you're subscribed to our channel. Jai Hind.